Assalamualaikum. So we will be starting in about 2 minutes, inshallah, at 9 sharp. पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा about the project we are going to talk about. उसके बाद we invite the guests और फिर have their introduction और उसके बाद हम गपशप लगाएंगे. क्रिप्टोकरेंसी पाकिस्तान ग्रुप में एक पोस्ट ऑलरेडी हुई है. एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा एंड इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट होगा they'll get $25 giveaway. यहाँ पे लोग अच्छे सवाल पूछेंगे. one of the good question will get $25 giveaway. इसके अलावा एक और भी लीग पे giveaway चल रहा है. 40 winners can claim $5 each. वो मैं इसके बाद ट्वीट कर दूँगा on Twitter. Let's wait for one more minute. Now inshallah we start. Hello everyone. आज हम OpiPets के साथ Ask Me Anything AMA कर रहे हैं. We have the two team members. We have Elliot and Sam को मैं भी invite करता हूँ. OpiPets जो है it's the first play to earn game जिसमें it's in the works और ये Opus का group है which is another subsidiary of Opus Cloud. ये उनका project है और उनके काफ़ी ज़्यादा इस तरह के projects हैं. OpiPets की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आई एम श्योर आप लोग आज सुन के काफ़ी इम्प्रेस होंगे. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सुने. इसके बाद में जो भी सवाल हैं रेज योर हैंड एंड वी पुट यू थ्रू और आप लोग अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं. मैं ज़रा गेस्ट को भी इनवाइट कर लेता हूँ. Hello, welcome here. I'm very excited to have a discussion with you. I would request if you guys could just give a quick self-introduction for the community and all those who are here. Elliot, you can start off first. Yeah, first of all, thank you for having us, and it's a pleasure to introduce the project to everyone here today who's took time out of your day to listen to us. So OpiPets is a free play-to-earn game that's being developed currently by Opis Group Limited. We're developing it on the Binance Smart Chain, and the game is going to be browser-based at launch. Looking to a native Android app being developed within a short period of time after that. OpiPets is an economy game with a role-playing element where customization is basically the name of the game. I'm sure we're all familiar with games like Pokemon, Digimon, etc. It's going to be very heavily pet-based battling game, but there's going to be thousands of pets and customizations available. There's going to be player versus environments such as dungeons. You'll be able to explore biomes, trade items via shops, and also we're going to have player versus player ranked battling and also staking, so you can actually stake the currency that you earn within the game. It's very much an economy game that we're developing, so we really want to enhance the player's ability to earn and trade and generate currency between each other in the game, and player-owned shops and also the NPC shops are going to be a huge feature in, let's say a legendary item drops, it will only ever be a small cost for the player to buy from the NPC, but then the players that feature within the game can then dictate price for the items that you gain through those means. Each pet is going to be able to be turned into an NFT, and therefore trading value for stats, items, customizations, weapons, and all the rich fruit within the game will also be
or potentially can be attached to the NFTs. I think that's a bit of a long-winded introduction, but nonetheless. That's good. It's good. I think there's a lot you guys have planned. I would also request Sam if he can also give a quick intro about himself. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? तो आप सबका रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा नाम सैम है, सलमान खान। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, CCP में मैं कमेंट्स पोस्ट करता रहता हूँ। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ OpiPets का साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। और गेम के बारे में जैसे अभी बताया मेरे कोलीग ने, ये एक फ्री प्ले टू अर्न गेम होगी जिसमें आपको कोई भी मतलब कैरेक्टर बाय नहीं करना पड़ेगा। बाकी जैसे आप एक इन्फिनिटी खेलते हैं या कोई और प्ले टू अर्न गेम खेलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि $200-300 वैसे खर्च करके आपको एक NFT लेना पड़ेगा, उससे आप खेलेंगे। लेकिन OpiPets में क्या होगा कि आपको कोई इस तरह NFT नहीं लेना पड़ेगा। स्टार्ट में जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको 2 कैरेक्टर्स NFT मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में तो ये होगा कि ब्राउज़र बेस्ड गेम होगा और उसके बाद हम फिर अपना एप्लीकेशन और एंड्रॉयड पे और iOS पे लॉन्च करेंगे। Very good. This is interesting. Okay, Elliot, I'll ask you, how do you guys stand out from the competition? Like, if you have any competitors which you think you have in the same niche, how do you compete with them and how you beat them and come ahead? Because by now there are so many pay-to-earn projects. I get it, you guys have a very comprehensive thing, and it's not just pay-to-earn, you have NFTs, metaverse and everything. But you must have analyzed these things, that how do you plan competing with the competition? If you can tell us something about that. Yeah, definitely. I think there's quite a few reasons why I believe that this project will be ahead of many of the others that would be deemed as competitors. First of all, OpiPets is going to be one of the first GameFi platforms that will allow our users to earn the currency but also stake the currency within the game. Obviously, it's free to play, so you don't have to pay a single penny whatsoever. And we will have one-of-a-kind hand-drawn characters with almost limitless customization options. It's very much a place where anyone can make it. It's not about what you start with, but what you do with that start. There's various avenues to wealth on the digital planet Opus, of which we're going to create a vast lore, including various kind of comic books. But the community will need to find a way that suits them with the many skill sets available to earn the currency in itself. It's not just about the NFTs either. It's not just another battling game. It's an entire world where the user can earn, grow, and flourish. The second feature is the evolving nature of NFTs and how they're implemented into the game. Your NFT actually evolves with you as you progress through the game, and you can level them up in training schools, increase the battling stats, and interact with them on a regular basis to keep them happy, but also develop and create more value for the pet that you're training. Lastly, the scope of the project is far and away ahead of the competition in the form of we're implementing our roadmap that allows us to create an entire world for gamers and crypto enthusiasts alike. We don't want people to just play to earn like any other game. We want people to enjoy it as well. I think one of the main features as well that one of our sister companies, if you like, is going to give utility to the token is we are also developing a cloud computing app, which you will be able to earn the utility token through charging your phone at night, and we will be pushing computing power to various projects around the world. One example of that would be scientific research projects. So again, we've got various different means to drive utility of the token, and they obviously increase the value of that as well. Okay, this is interesting. So, if I understand correctly, OP Clouds will be somehow integrated with OpiPets? Yeah, very much so. I think in terms of the cloud computing app, which is a slightly different project, but I can touch on that now. We will probably be looking at integrating earning the currency that will be usable in the game through the cloud computing app as well. Oh, great. So can you share some of the achievements the team has made so far, and what are the major targets OpiPets is yet to achieve? And if it is possible, can you share a roadmap for the listeners? Definitely. I mean, some of the main achievements thus far is we've
secured an initial investment of $4 million. This has helped us push through development of the game, which we're looking to launch late June, early July. We are basically already in development. The costs and the project is funded thus far, and therefore being able to move onto the marketing machine and kind of start releasing things here and there to the public is very much of the nature where we're at now. We've hired up to 12, I think it's 12 internal staff, and I think there's 8 or 9 external staff as well that are all working full time on the project. And just this week we've launched our website, which open to feedback on that, very much in early stages. So we're definitely moving in the right direction. Obviously, we've got 2 companies that are running side by side, as I mentioned, the Cloud and OpiPets Game now, and they're both going to be working in tandem to support each other in the upcoming months. Great. And what are the utilities of in-game and the governance token you just mentioned earlier? So the governance token, in essence, is going to influence the decisions. So the governance token is only ever minted once. There's going to be 5 million in circulation. And the utility of the governance token is you'll be able to vote on decisions that influence the ecosystem. We're not going to mint it after the initial mint, and there'll never be any more in circulation. The in-game token obviously allows you to then purchase assets in the game, trade for NFTs, and then whether it be training, battling, or staking currency with another player, there'll be many, many ways that the in-game token that will be utilized within OpiPets. All right, great. So Sam, I have a question from you. अगर हम बात करते हैं कि ये आपका जो प्रोजेक्ट इवेंचुअली लॉन्च हो जाता है, तो जो लोग सुन रहे हैं यार एक आम बंदे ने जब इसमें इन्वॉल्व होना है, तो व्हाट विल बी द स्टेप्स जो वो लेके इस गेम में इन्वॉल्व हो सकता है, एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद डे टू अर्न, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलिंग एन ऐप और बाइंग टोकन, किस तरीके से उसके पहले कदम क्या होंगे इस गेम में इन्वॉल्व होने में? वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब ये प्रोजेक्ट इवेंचुअली लॉन्च हो जाता है तब की बात कर रहे हैं. मकसद इस सवाल का ये लोगों को आप बता सको कि इट इज़ वेरी इजी टू गेट इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट, अगर उस पर आपको लाइट डाल दो. हाँ, तो वो बिल्कुल गुड क्वेश्चन. उसका ये देखें, बहुत आसान तरीका है कि आप अकाउंट बनाएंगे, आपको 2 पेट्स जो है फ्री में मिल जाएंगे. उसमें फिर ऐसा होगा कि आप अभी हम नेक्स्ट वीक और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम जो ब्राउज़र बेस्ड गेम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी लोग वो जो हमारा इन गेम टोकन है वो अर्न कर सकेंगे. और वो सिंपल गेम्स होंगे, जैसे मतलब सुपर मारियो हो गया, वो एज ए सिंपल वैसे उस टाइप के गेम होंगे जो सिंगल टच गेम होते हैं. उस टाइप के गेम्स अभी हम 60+ लॉन्च करेंगे. उसके बाद जो है वो वो जो हमारा गवर्नेंस टोकन है और लेट वन जो इकोसिस्टम टोकन है अंदर गेम, इन गेम टोकन, वो अर्न कर सकेंगे इसमें. ठीक है, तो लेटर ऑन जब हमारा गवर्नेंस टोकन लॉन्च होगा, दे विल बी एबल टू कन्वर्ट इट और वो सेल कर सकेंगे. तो अर्निंग हमारी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट हो जाएगी थ्रू आवर वेब गेम्स जो हमारे होंगे. उसके बाद हम फिर अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, गेम्स लॉन्च करेंगे साथ में. तो ये 60+ गेम्स जो है हम स्टार्ट करेंगे 5 to 6 से. अभी 3 आप अगर वेबसाइट में देखें तो वीडियोस हमने प्रीव्यूज उस पर डाले हुए हैं, लोग जाके देख सकते हैं. वो सिंगल टच गेम्स हैं और दे कैन स्टिल अर्न इट जो इन गेम टोकन. ठीक है, तो ये अकाउंट बनाएंगे, 2 पेट्स उनको मिल जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू अर्न. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो अभी वेब बेस्ड मिनी गेम्स थी, दिस इज़ गुड टू नो कि उसके अंदर भी इवेंचुअली जो है टोकनॉमिक्स इन्वॉल्व होंगे और वो बस वैसे ही नहीं होगा कि जाके वेबसाइट वैसी टाइप ज़ाहिर करने के लिए खेल रहे हो. नहीं, वो दूसरा एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था सीसीपी में कि इसका मतलब वो गिल्ड वाला सिस्टम करेंगे या स्कॉलरशिप वगैरह स्टूडेंट्स के लिए. तो उसमें ये होगा ना कि वो स्कॉलरशिप की ज़रूरत ही नहीं होगी. आप ये फ्री टू प्ले, आप मतलब जैसे नॉर्मल गेम खेलते हैं उसमें आप जैसे कि पबजी खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, उसमें आपको टोकन मिलते हैं. तो वो ये जो है ये आपसे बाद में कन्वर्ट कर सकेंगे और उसको मार्केट में वो कर सकेंगे. तो इसके लिए कोई भी एंट्री लेवल 0 है, मतलब इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी स्टार्ट, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं.
اور دوسرا میں وہ او پی آئی کے بارے میں, او پی آئی کلاؤڈ جو ہے اوپس کلاؤڈ, اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ کروں. وہ ایسا ہے جیسے وہ پائی ٹوکن نہیں تھا, سب کو پتہ ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح مطلب آپ ڈیوائس پہ رن کر سکیں, لیکن وہ آپ سیل نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ اسٹوری. میں یہی کہنے لگا تھا کہ غلط کوائن ساتھ کمپیریزن تو نہیں کر دیا. ہاں وہ غلط ہے, لیکن جو مین آئیڈیا لوگوں کو آسانی سے ہو جائے گا وہ اسی طرح ہوگا. مطلب آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اپلیکیشن ہے وہ بس مائننگ کرتی رہے گی. ہمارے لوگ مائننگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ مائننگ نہیں ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, جس سے وہ مطلب وہ ریوارڈز ملیں گے. تو کائن تو غلط ہے, لیکن کانسیپٹ ہمارا وہی ہے, اور دے ول بی ایبل ٹو سیل اٹ ان دا مارکیٹ. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہمارا گورننس ٹوکن لانچ ہوگا تو ان گیم ٹوکن جو ہے دے ول بی کنورٹیبل ٹو گورننس, اور اس حساب سے. اور باقی جو ان گیم ٹوکن ہے اس میں باقی یہ این ایف ٹیز, باقی کریکٹرز بھی بائی کر سکیں گے, اپ گریڈس کر سکیں گے. یہ جو ہمارے کریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, او پی پیٹس کے, یہ ہینڈ ڈران ہیں. ہمارے آرٹسٹ ہیں جو بڑے بڑے گیموں سے آئے ہوئے ہیں, جو مارکیٹ میں جائنٹس ہیں ان سے آئے ہوئے ہیں, وہ ہینڈ ڈرا کر کے پیٹس بنا رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مطلب ڈیمانڈ ہو کمیونٹی کا کہ ہمیں یہ چیز مطلب اس کی کسٹمائزیشن چاہیے, تو وہ کسٹمائز بھی ہو جائے گا, اور یہ باقی بھی ایڈ کر سکیں گے. دوسرا یہ مارکیٹ پلیس جو ہمارا ہے وہ اس کے اندر ہی انٹیگریٹ ہوگا, جس میں یہ لوگ مطلب ایک جیسے آپ گیم کھیلتے ہیں نا, اس میں آپ کا لیول بڑھتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیٹ کا لیول بڑھتا جاتا ہے, تو اس حساب سے اس کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے. تو وہ آپ میں مارکیٹ میں پٹ کر سکتے ہیں, اور وہ مارکیٹ پہ پرائس ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ اس حساب سے ہوگا. بہت سارے بینیفٹس ہیں, گیم نہیں ہے, اوپس کلاؤڈ بھی ہے, باقی بھی چیزیں پائپ لائن میں کافی. اوکے, ابھی ایک یہ میٹاورس چینل میں کسی نے سائلنٹ کلر نے کوشچن کیا تھا. آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی پروجیکٹ از انڈر ڈیولپمنٹ, اور کی ویب سائٹ پہ جائیں تو روڈ میپ جو ہے اس پہ بھی کلیئرلی انہوں نے شو کیا ہوا ہے کدھر پہنچا ہے. بٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے ٹو پریونٹ کہ دیئر ٹوکن فرام میٹنگ دا سیم فیٹ ایز ایس ایل پی, کیونکہ اس کو بیلنسنگ کس طریقے سے کریں گے کوائن کی, مطلب اس میں کوئی انٹیگرل برن ہوگا, وہ کس طریقے سے ہوگا؟ بالکل, ہمارا جو ٹوکنامکس ہے نا بہت مزے کا ہے, کیونکہ جو ہمارا ان گیم ٹوکن ہے وہ ٹریڈیبل ہی ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جتنے زیادہ پلیئر ہوں گے اتنا زیادہ برن ریٹ زیادہ ہوگا. جیسے مطلب بائنانس چین زیادہ یوز ہوتا ہے تو بی این بی زیادہ برن ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایسا ہی ہوگا سسٹم, ایسے ہی سارا. جتنے زیادہ پلیئر بڑھیں گے اتنی سپلائی کم ہوگی, اور جو ہے ہمارا ایس ایل پی والا فیٹ ہوگا ہی, کیونکہ ایس ایل پی بھی مارکیٹ میں ہے اور ایکسیس بھی مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. تو جو لوگ ایس ایل پی ارن کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو ان گیم ٹوکن ہے وہ ٹریڈیبل نہیں ہوگا, اور جو ہمارا گورننس ٹوکن ہے صرف وہی ٹریڈیبل ہوگا. اوکے, انٹرسٹنگ. ابھی ہم کمیونٹی سے کوشچن لیتے ہیں. اگین میں لوگوں کو ریمائنڈ کر دوں, whoever asks a good question they have a chance to win $25. یہاں پہ بھی ہم جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ان کو باری باری لیں گے and we'll see if they have a question. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ میں ایک ٹویٹ کر دوں گا جس میں گیم کا ایک گیو اوے ہوگا, اینڈ there will be like 40 ونر جو اس میں سلیکٹ ہوں گے, وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اوپی پیٹس کے ساتھ ہماری 4 ویک گیو اوے کا سیشن چل رہا ہے. 2 ویکس والا ہمارا ہو چکا ہے, اس کے ونرز بھی آلریڈی اناؤنس ہو گئے ہیں, ان کو پرائزز پہنچ بھی گئے ہیں, وہ بھی میں اسکرین شاٹ ٹویٹ کر دوں گا. اینڈ وی ہیو 2 مور ویکس, ہر ہفتے ہم ایک ایک کریں گے گیو اوے تھینکس ٹو اوپی پیٹس. تو ابھی میں کوشچن پوچھتا ہوں جنہوں نے ہاتھ ریز کیے ہوئے ہیں. I'll start with علی عواب. اینڈ آصف اکبر. اوکے, علی آپ اپنا کوشچن پوچھ لو, اور آپ یہ بھی بتا دو کہ ایک سوال آپ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میرا سوال آپ سے ہی ہے, اور مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میں کیونکہ کمپلیٹلی بگنر ہوں یہ گیمس کے تھرو, جو این ایف ٹیز اور اس کانسیپٹ کے, میں نے جوائن ابھی صرف آپ کا لنک مجھے نوٹیفیکیشن آئی تو میں نے جوائن کیا. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا فار somebody like me who is a complete beginner in this field, تو مطلب بگنرز کے لیے کیا پوٹینشیل ہے اس میں, اس پہ کام کر سکتے ہیں, یا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ٹرمز آف پوٹینشیل اس کو ایز اے پیسو انکم اس میں کچھ ہوتا ہے سورس, اس کو بنایا جا سکتا ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. میں اسپانسر کرنا چاہوں گا. بالکل, میں بھی آپ کو ڈائریکٹ کر رہا تھا. علی باب تھینک یو یار. سیم ول آنسر یور کویسچن. بہت اچھا کویشچن ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے جو ہیں آئٹ سے جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو فائنینشیلی مطلب اس طرح نہیں ہے,
तो हमारा टारगेट ही वही है, उनकी तरफ है। क्यों? बाकी अगर आप देखें स्कॉलरशिप से ये वो, आपको बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा है। हमारा ये फ्री है, फ्री, आप फ्री खेलें जैसे आप गेम खेलते हैं, और एज अ पैसिव इनकम जो बस क्लाउड हमारा होगा, वो जो लॉन्च होगा, वो भी एक पैसिवली, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, तो दैट विल बी योर पैसिव अर्निंग। और गेम भी सेम है, गेम जैसे आप गेम खेलेंगे, ऊपर जाएंगे तो आप और इन गेम टोकन अर्न करेंगे, सो दैट विल बी अ पैसिव इनकम फॉर यू। और उसमें ये होगा कि आपको कोई भी बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कोई NFT बाय करने के लिए। सो इट विल बी एज सिंपल एज यू आर प्लेइंग अ गेम ऑन योर फोन, you have downloaded an Android game and then you have started playing it. So it will be as simple as that. Okay, Elliot, I have a question I would like to ask from you. Usually we have seen in such comprehensive and vast projects that the roadmaps get pushed. So how you guys are going to ensure, you have already mentioned that you have a vast team, but what you guys are doing to ensure that your roadmap is followed in true letter and spirit? Yeah, very good question. I think, in essence, a lot of the things that we've mentioned on our roadmap are quite ambitious. So, the very nature of sticking to it and staying true to it without pushing it back is going to be a very difficult task. However, we are going to ensure, to our best ability, that we try not to do that. The first initial year, which is this year, 2022, we are looking to obviously expand the team, get the game released, and then release game updates. We're looking to grow the community as well. It perhaps becomes a little bit more difficult when we go further down the line, when we start looking at transforming the game into a 3D game, and also pushing it for implementation of virtual reality. I think the answer to your question is, in terms of how we avoid pushing the roadmap back and also staying true to it at the same time, is we're going to hire the right staff that have the ability to do it within the designated timescale. We have a very devoted team that works crazy hours to make sure that we don't delay things, but also we have the passion and the energy to deliver everything that we've promised. You know, we've thought this through to great detail. We spent a lot of time deciding what's achievable and what's not, and everything we've promised is very much deliverable. So, in essence, we can't say anything outside of we are going to push this with all our might on all fronts as much as possible, and we are very, very invested in this project. You know, the whole team as a whole literally lives and breathes this project. It's very much a passion for us. So we'll do everything within our power to make sure that we implement it on time and to a standard that the community will be happy with. Great. I just saw that your project will eventually, the metaverse will be VR enabled. So just today, I ordered my Oculus so that I can enjoy the VR experience as well. I think there's an element of the website that's already VR enabled actually, so feel free to check that out and let us know how it functions. Sure. I'll share the feedback with Sam. Alanis, if you have a question, you can ask. I think ये सब प्रोडक्ट ले लेते हैं, केरी मलिक। Okay, केरी को मैंने invite to speak किया हुआ है। Chat police को भी मैंने invite to speak किया हुआ है। He is more than welcome to join us. बाकी मैं lobby से सवाल उठा लेता हूँ। वो अच्छा, Okay, आसिफ दोबारा क्वेश्चन पूछा है इसको मैं अगेन से ले लेते हैं। Okay, आसिफ आप अपना सवाल बता दो किस Chat police, you can ask your questions. नहीं कहीं आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, बता दो क्वेश्चन किससे आप कर रहे हो। Chat police भाई ये भी डॉर्मेंट है probably. ये डॉक्टर डॉर्मेंट। ठीक है, चैट में कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं।
sure. Hello. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you, mate. Okay, so my question is because I was just playing this Titan Arena. Maybe you are aware of that game, right? That is, Yes, they are also called their game play to earn, right? But when I entered the game and I started playing and I was experiencing, it's not like more likely pay to earn. It's not a play to earn. It's pay to earn because you buy a higher hero, and then you will be able to rank up. And if you are playing with a free hero, you can only get to a certain level, and on that level you will be earning this what we call it free token, right? But you will not be able to withdraw it because you need to reach at a certain level to withdraw it, right? So and to reach that level, you need to buy a bigger hero with more spells and upgraded hero, right? So how is OpiPets different from that? Great question. I mean, I don't have much experience with the game you referred to, but we don't want to entrap our players into a false belief of play to earn. I think what you're saying brings up a lot of valid points and quite a lot of issues with various games that are out in the moment. We do have a system of which pets can get stronger, and therefore new players might feel as if there's an entry level there. First of all, the game is free to play, full stop. You can withdraw your funds whenever you want. There's no fees there attached to that. We don't lock you into needing to buy your way to progression to compete. Players can compete against pets their own level. They can enjoy the play versus environment, the dungeons, the quests, the achievements at their own pace. Whether you want to be a hardcore competitive player in this game, you can do that at your level, and therefore, let's say, for example, you have a level 1 pet, I have a level 500 pet, we will never cross paths unless it's a friendly challenge. There is no matchmaking where you are bound into playing against people that perhaps, let's say, for example, have pumped thousands of dollars into the game. Every aspect of the game is tailored towards free to play, but also giving users an option to be able to play the game in their own way, of which they can earn, which suits themselves. As I mentioned before, there's various different ways you can earn. There's arcade games, which I think Sam touched on, but there's questing, dungeons, we have friendly PvP, we have competitive matchmaking PvP, which will level you again, which will pitch you against people at your level in terms of pet-wise, but then we have millions of different options for that to avoid those problems, basically. I hope that answers your question anyway. I'm sure it does. Okay, I have one question before Can you ask now? Okay, Ran, yeah, sure, you can go ahead and ask your question. Hello. Yes, we can hear you, please. So, I have two questions. The first question is, many NFT games today that are high cost to start the game, and therefore start with a small player base. Now you have an entry free or starting condition. And if so, what I say? Do I need to hold an NFT to or contain amount of token in order to enjoy and play the game? And the second question is, if you were to summarize OpiPets in one word, what would it be? Why? Thanks. Great question again. So, while the pets can be turned into NFTs, it's not a necessity to play the game. If you wanted to trade your pet, attach customizations to it, and then you might want to trade it for a different pet on the market, then you can do that. You only need to mint an NFT to access an extra layer of the game. But in essence, everything is free to play, and you do not need an NFT to touch any aspect of the game. In terms of summarizing it in one word, very good question.
to say, I might have to come back to you on that one, to be honest. I've always too much time. Okay. Meanwhile, I'll ask you another question again. You mentioned that there will be in-game staking option available. So one user asked in the lobby that for some reason, if he has placed his point for staking and he is not active in the game, so will that staking continue? Because generally in normal cryptocurrency, that is the sole purpose. It's sort of a passive way of income. But will that staking continue, or users will have to eventually log in or join the game or do something within the game for the staking to continue? I mean, the staking within the game is a great way of keeping the currency within the game. If people are withdrawing it, putting it on exchanges and selling it off, then it perhaps doesn't have a good result on the price of the token. So we encourage staking. You do not need to play the game to access the staking. You can sign up, log in, stake your money against whatever the APR rates, and keep it there as long or as short as you like. Great. Small film, you can ask your question and let us know with whom you want to ask that from. I just want to ask Sam कि कितने प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो रहा है गेम? ये अभी फिलहाल जो है BSC पे हो रहा है, ठीक है, तो हम BSC ब्लॉकचेन पे पहले लॉन्च करेंगे. मैं प्लेटफॉर्म ये पूछ रहा हूँ कि मोबाइल पे और पीसी पे दोनों पे होगा ये? अच्छा, अभी फिलहाल जो है हमारे आर्केड गेम्स जो हैं वन टच या आर्केड गेम्स, वो जो हैं अभी PC बेस्ड होंगे, मतलब ब्राउज़र बेस्ड. उसके बाद हम डेवलप कर रहे हैं अब अपना एंड्रॉयड और iOS भी बाद में करेंगे इंशाल्लाह. लॉन्च हो रोड मैप में है. थैंक यू सो मच. ओके, इस पे सैम मुझे अगर ठीक कर देना अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ. इवेंचुअली जो आपका अभी तो आपका वेब बेस्ड होगा, उसके बाद इवेंचुअली आपके पास PC बेस्ड भी गेम्स में आ जाएगी. तो जो दोनों गेम्स होंगी वो क्रॉस प्लेएबल होगी. फॉर एग्जांपल कि अगर जो बंदा मोबाइल पे खेल रहा है, ही कैन कंटिन्यू दैट ऑन द डेस्कटॉप एज वेल. इसी तरीके से हाँ, जब हमारा जो है मेगा गेम हमारा लॉन्च होगा, मेन गेम जो 3D कैरेक्टर्स और बाकी सब कुछ, तो दैट विल बी प्लेएबल. और आपके पास एक आईडी होगी, आप वेब बेस पे भी आप लॉग इन कर सकते हैं, आप मोबाइल बेस पे भी लॉग इन कर सकते हैं, एंड यू विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर यू लेफ्ट ऑन PC और मोबाइल. सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. इसका कोई मसला नहीं होगा. गुड. इफ यू गाइस मैनेज टू पुल इट ऑफ, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इसका पॉइंट होगा टू हैव इट ऑन द मोबाइल एंड आल्सो ऑन द PC. Drag Pong, you have a question, you can ask and let us know from whom you want to ask the question from. Hello? Yes, we can hear you. You know, the big wins are traditional gamer and blockchain gamer is still huge. Okay, OpiPets prices to attract more traditional gamer, any player to try the new blockchain based game. What is your plan to expand the adoption of your project to traditional gamer, please? I think what I understood from the question is that if a traditional player can also play the blockchain games. What is the plan to kind of introduce the game to traditional gamers? Yeah, correct. I think, okay. Yeah, so in essence, we kind of want to create a game that's going to appeal to gamers that have no knowledge of cryptocurrency, and, you know, in essence, don't really care whether it's a cryptocurrency play-to-earn game. We want to create a game for gamers, first and foremost, and have the play-to-earn crypto element as a bonus. I think the way we're designing it, and most of the people that work on the project have been gaming now for many years, and it's very much kind of a project that we're invested in from a personal level as well. I play various different games day to day, you know, Dota, League of Legends, all sorts of stuff on Steam, or it's StarCraft back in the day. But also, you know, Pokemon, which is where a lot of the inspiration came from. We want to create a high-skill game, which is very competitive. And whether or not you're bothered about earning the cryptocurrency on the side, it's going to be fun for these people that are interested in that type of project. All right, I hope that's
Okay, I think there were a lot of questions. To find the best question, I'll give the recording to Sam. उसमें वो फिर select कर लेगा जो उसको लगता है जो best question है. उसके बाद I'll reach out to them और CryptoAwaz Twitter के ऊपर मैं mention कर दूंगा कि उस पे winner कौन है. I think we'll wind it up here. और it was very good. It was very informative और काफी हमें चीजें पता चली हैं. Questions भी अच्छे थे. Elliot or Sam, if you guys would like to say something before we just close the session. Elliot, would you like to add something? Yeah, sure. So, excuse me, sorry. Yeah, I very much appreciate all you guys' time today. If there is any more questions that you'd like to ask us, or perhaps you didn't get a chance to ask us something, or maybe you want to touch on some of my answers or Sam's answers and expand on that, feel free to join our Discord server. Feel free to jump on our website, that's OpiPets.io, and we're happy to have a chat with you all day, every day. There's plenty of staff that can answer your questions, and we'd love you to, get involved in the project in any shape or form. We're open to suggestions as well, and if there's something you think that we can improve on, by all means ask us or suggest it, because, it is going to be a community-based game, so we welcome you all to get involved. और आखिर में भी कुछ थैंक यू सो मच गाइस, आप आए, आपने सुना सारा कुछ. तो हमारा यही मिशन है कि मैं इसलिए ये सारा गेम इधर लेके आ रहे हैं कि लोग कुछ काफ़ी जो नए लोग आते हैं क्रिप्टो करेंसी में और प्ले टू अर्न में, किसी के पास मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ फंड्स नहीं होते, या कोई वो इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ में या जो भी हो वो ट्राई करना चाहता है. तो उसमें ये है कि फ्री प्ले है, तो उसमें आप टोकन ले सकते हैं, उससे आप अपना एक ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. कि आपके पास भी एंट्री के लिए कुछ फंड्स नहीं है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में, या आप कोई टोकन लेना चाहते हैं, या आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ये भी एक बेस्ट वे है कि आपके पास हर चीज़ फ्री है. आप गेम खेल रहे हैं, आप गेमर हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी गेम खेलते हैं. हमारे ग्राफिक्स और हर चीज़ इतनी होगी कि आप अगर पबजी खेल रहे हैं तो उसके मुकाबले में आप ये खेलें तो इसमें भी आपको मज़ा आएगा. आपको ये नहीं होगा कि सिर्फ आप एक टोकन के लिए खेल रहे हैं और दैट्स इट. ये हमारा मिशन है. और बाकी जो ओपिस क्लाउड जो हमारा है वो मेन चीज़ है. काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी जो वो टोकन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर कोई कहता था कि मैं इतने कमाए, वो मार्केट में ही नहीं आया. तो हमारा ये मिशन है कि हर कोई उसमें से, मतलब अगर आपको मिलते हैं फॉर एग्जांपल वीक $1 मिलता है, आप बाई वीकली 15 दिन बाद $1 मिलता है, फ्री में आप कुछ नहीं करते, तो दैट इज़ आल्सो अ बिग थिंग. क्योंकि मोबाइल तो हम वैसे भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक जो है ना, आपको एक ब्लॉकचेन में एंट्री के लिए एक थ्रेशोल्ड की ज़रूरत नहीं होगी और आप एंटर हो जाएंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और आप लोगों के क्वेश्चंस. और I'd like to confirm, मैंने वो लास्ट क्वेश्चन नहीं सुना जो एटन अरीना के बारे में पूछा था. वो चैट पुलिस ने पूछा था या किसने? याद भाई, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ताकि आप आराम से उसमें बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें. और दूसरा इसमें जो एक दो अच्छी चीज़ें मैं भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. एक तो ये कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में ना विल बी द वन हु आर अर्ली अडॉप्टर, जो बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे. किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी ज्वाइन करने में बहुत फ़ायदा होता है. और अभी इसी सर्वर में जो लोग NFTs के वाइट लिस्ट के लिए ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वो गेम के अंदर जाके गेम खेल के इंटरटेनमेंट है और अपनी गेम की प्रोग्रेस और वो जो आप टोकन अर्न करते हो वो अपनी जगह है. ट्विटर के ऊपर मेक अ ट्वीट के OpiPets के सारे जो सोशल अकाउंट्स वगैरह वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा. और वी हैव लॉट्स ऑफ गिवअवेज प्लान, वो हम करते रहेंगे courtesy OpiPets, ठीक है. And Elliot and Sam, thank you very much for coming. It was very informative, and thanks for taking out the time and briefing us about the project. Thank you, it's a pleasure. Cheers. Okay. भाई, Okay जी, thank you guys, everyone. Assalamu alaikum. मैं फिर exit कर रहा हूँ stage. Take care. Cheers guys, thank you.